हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सिर्फ बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। नेम ऑफ द पेपर इज़ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू प्री मौर्यन पीरियड। मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 हैं। 45 का पेपर है। 5 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लगाए जाएंगे। टाइम 3 घंटे का है। सबसे पहले इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 5 का आपने आंसर देना होगा। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसका आंसर 25 टू 30 वर्ड्स के बीच में आपने देना है। उसके बाद हर एक यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट में से 2 में से एक क्वेश्चन आपने करना होगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यहीं पे मिल जाएंगे। ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, इसका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पेपर आता है। पंजाबी मीडियम के बच्चों का पंजाबी का ही पेपर होता है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब ये वो स्टूडेंट्स लेते हैं ये सब्जेक्ट जिन्होंने पहले पंजाबी नहीं की होती। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट नेम ऑफ मेजर 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ त्रिपिटक। नेक्स्ट व्हाट इज त्रिपिटका एंड देन हु वाज सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट हाउ मैनी मंडल्स इन ऋग्वेदा। नेक्स्ट है हु वाज सुदास एंड हु वाज पाणिनि। Next, write about the origin of the word caste, and then who was Ambi. Next question, when and where did Alexander die? And next, mention the name of 2 women scholars of later Vedic age. Why is the Punjab called the gateway of India? And next, name the 2 important passes in the northwestern frontier. And then, by which name was Punjab known in Rigvedic age? Next question, who discovered Harappa and when? And then give the name of 4 Varna. And next write 2 demerits of caste system. And next who was Dhritarashtra. And next mention 2 economic effects of Alexander's invasion of India. And then give 2 political effects of Alexander's invasion of India. And then write names of 2 archaeologists connected with the discovery of the Harappa culture. And then name 2 places in Punjab where the remains of the Harappa culture have been discovered. And then name the 4 Vedas of the Aryans, which one of them is the oldest. And next mention 4 causes that led to the growth of caste system. And then name the 2 great epics of India and also write the name of their authors. And then name the 2 rivers which form the boundary of the kingdom of Porus. And then what were the 4 famous names given to Punjab? And then why Indus Valley civilization is called Harappa civilization. And next, how many Puranas are there? Name any 4 such Puranas that are important as sources of history. And then what were Sabha and Samiti? And next step, what do you mean by the word epic? The names of the 2 great epics of India. And next, which river of Punjab decided the turn back of Alexander and why? And next, who was Porus? When and where Alexander died? And next, name the 4 cities described in epic age. And then explain the term Pentapotamia. And next, write a note on the Vedas. And then comment on numismatic evidences. And next, explain the term Gopati. And then write a note on the Pashupati seal. And next, comment on the Aryan invasion history. And then explain the term Janapada. Next question, who is the author of Ramayana? And then explain the term Vidata. And then write the names of any 2 Vedic goddesses. And next write a note on Harappa. And then who was Rakhal Das Banerjee? And then comment epigraphical sources. Next explain the term Gopati. And then write a note on the great bard. And next explain the term Sapat Sindhu. And next comment on Ashwamedha sacrifice. Then explain the term Varna. And next question, who is the author of Mahabharata? And then write a note on Vedic deity Agni.
And next, who were the Dasuas? And next, what were Ashrama? Who were called Chandals? Who wrote the Ramayana? And next, which is the longest epic? What do you know about the kingdom of Porus? And next, who was Gandhari? And then when and between whom the battle of Karipalan was fought? ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हर एक यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। यूनिट फर्स्ट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे और इसमें से आपने एक का आंसर देना होगा। इसमें क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब, एक्सप्लेन इन डिटेल, and then describe the impact of physical features on the history of the Punjab, and then write an essay on the archaeological sources, and next describe the literary and archaeological sources of the ancient history of Punjab, also throw light on their importance. And next, what do you know about the Harappa civilization, discuss its extent and the main features of town planning, and then write a detailed note on town planning of Harappa culture, and then write an essay on Mohenjo-daro's town planning. ये यूनिट फर्स्ट था। अब है सेकंड, what are the main theories regarding the original home of Aryans, discuss, and next describe the social, religious and economic life of Punjab during Rigvedic age, and next describe the social, economic and religious life of the people of the Harappa civilization, and then write an essay on the Harappa society and religion, and next discuss the salient features of the Harappa civilization. इसमें salient features हैं। and next है what was the causes of the decline of Harappa civilization, and next I give an account of the social, economic and religious life of the later Vedic Aryans, and then write an essay on the political life of the later Vedic Aryans. हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हो, और हिंदी मीडियम, पंजाबी और इंग्लिश मीडियम में ये अपलोड किए जा रहे हैं, और सिलेबस भी यहीं पे मिल जाएगा। और इसके अलावा पंजाबी कंपलसरी और सोशियोलॉजी के पूरे लेक्चर्स पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, बहुत ईजी वर्डिंग में। वहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। आपके मार्क्स कितने आते हैं, कैसा लगा ये वीडियो, ये ज़रूर बताना। और आगे से कुछ भी आप पूछना चाहते हो कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल and religious life of Indus Valley civilization people, and next write the main features of Rigvedic Aryans, and next discuss the social and economic life of Rigvedic Aryan. And next है unit third, give an account of the origin and evolution of the caste system. What were the main causes responsible for the origin of the caste system? Give its merits and demerits. And next write an essay on the origin of the caste system. Give an account of the political condition of North India on the eve of Alexander's invasion. Next discuss the historical importance of the Ramayana and Mahabharata age, and next discuss the historical significance of the Mahabharata. यूनिट फोर्थ में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, साथ में मैप का क्वेश्चन होगा। ये आपकी चॉइस है, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लो चाहे आप मैप का क्वेश्चन कर लो। इसमें है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द वैदिक एज, नेक्स्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वीमेन इन ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, and then write an essay on the position of women in Harappa society, and next discuss the political and social impact of Alexander's invasion of the Punjab. On the outline map of Punjab, show the following historical places and write explanation note on any 2 places. Mohenjo-daro, Kotla Nihang Khan, Sangol, Taxila, Indraprastha, Kurukshetra, Hastinapur, Harappa, Banwali, Paruspar, श्रीनगर, संकाला। हाँ जी, ये थे इसमें प्लेसेस जो आपको पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपने फिल करना है मैप के ऊपर, और 2 का आपको नोट लिखने के लिए बोला जाएगा, उसको डिटेल में आपने लिखना होगा। थैंक्स, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, आई एम श्योर यू विल डू द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।